वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास +2 दैट इज अ केमिकल काइनेटिक्स। अब बेटा आपको पता है, आपने अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करती हूँ, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वी कैन से इन विच रिएक्टेंट इज चेंज इनटू अ प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो इट मीन्स कि रिएक्शन टेक प्लेस, कि कोई रिएक्शन हो रही होगी जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब कोई भी रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है वो आपने करा इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कैसे कैलकुलेट करा? बाय द हेल्प ऑफ अ ईएमएफ, जिसके न्यूमेरिकल हमने किए थे। अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इट टेक प्लेस, रिएक्टेंट इज चेंज इनटू अ प्रोडक्ट। इफ द ईएमएफ comes out to be negative then the reaction is non spontaneous. But at what extent the reaction take place? अगर let's suppose the EMF comes out to be positive तो reaction spontaneous है, बट किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है, कि कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कितने वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। जो ये वाली टर्म है आपने +1 में केमिकल इक्विलिब्रियम में करी थी। बिफोर अटेनिंग अ इक्विलिब्रियम हाउ मच रिएक्टेंट इज रिएक्टेड विद ईच अदर टू चेंज इनटू अ प्रोडक्ट। बट द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि एट व्हाट स्पीड द रिएक्टेंट कैन रिएक्ट। आई रिपीट, बेटा you know the chemical reaction, you know the value of EMF, whether the reaction take place and not take place. But the main thing is that when a reaction is take place, when the reactant is changed into a product, at which speed the reactant react with each other to change into a product, and how, and the second thing is that, and the how reactant react with each other to change into a product means the mechanism of a reaction, how reactant react with each other to change into a product, how the chemical reaction take place. This all the things we do in our chemical kinetics. Now the definition of chemical kinetics is based upon this concept which I told you. It is the branch of chemistry which deals with the study of a speed. Speed means rate, you can say the rate also of chemical reaction, and the factor which affect the rate of reaction means कि जो speed है वो fast होगी, slow होगी, it depends upon some factor. जैसे let's suppose if you are moving on a bike and the automatic and suddenly the rain comes and it affects your speed of an automobile. This is the factor, rain is the factor when there is a hot summer weather outside, and it also affects the speed of your vehicle. And when too much cold is over there and too much fog is over there, so these are the factors which affect your speed. So that's why same in our chemistry there are many factors which affect the rate of a reaction. Rate of reaction means which affect the speed of a reaction, and we have to do that factor in that chapter. And the mechanism by which the reaction proceed means कि how reactant react with each other to change into a product. This all the things we do in a chemical kinetics. Now next is classification of a reaction based upon the rate of reaction. This is the very first topic of this chapter. We can classify the reaction based upon the rate of reaction. Rate का मीनिंग मैंने आपको बताया, किसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे? स्पीड के बेस पे बेटा। अब आपको पता है स्पीड कैसे हो सकती है, या तो फास्ट हो सकती है, या स्लो हो सकती है, या फिर मॉडरेट हो सकती है। सबसे पहले क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन एज द नेम इंडिकेट द रिएक्शन विच टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, like in a second or minutes. These are a very fast reaction. The example of this reaction is a very common example you know from that 5th, 6th, 7th class, that is a base react with the acid to change into a NaCl and H2O. This is an example of a neutralization reaction, and this is a one type of a ionic reaction. Sorry, ionic reaction are a very fast reaction which take place in a short duration of a time. And the second one is the very slow reaction. Slow means the reaction which take place in a days or month. Like we can say the rusting of iron. It takes few months to corrode the metal. And the third reaction, the reaction which cannot take place at a fast or a slow rate, but at a moderate rate, means we can say that the very fast reaction take place in a second or minutes, and that slow reaction take place in a days or month, or we can say the moderate rate take place
Mars. Its example is the decomposition of a ethyl acetate. This is a ethyl acetate. C2H5 is the ethyl and the common name of this is acetate, or you can say ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate. It is the IUPAC name of this. When do the acetic hydrolysis? Acetic hydrolysis means water add करने in the presence of a acid. It undergo decomposition. It dissociate to give a acetic acid. Acetic acid is the common name, but its IUPAC name is the ethanoic acid. And alcohol is formed. This is a ethyl alcohol. Ethyl alcohol is the common name, and ethanol is the IUPAC name. So you can classify the reaction based upon a speed. They classify in 2 or 3 types. One is a very fast, slow, and a moderate. These are the example of these reaction. Note down. I hope you are note down. Now the next topic. अब देखो बेटा क्या है. अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो रिएक्शन है, किसी की स्पीड फास्ट है, किसी की स्लो है, किसी की फास्ट है, तो हर एक रिएक्शन का जो रेट है वो अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है. ऐसा क्यों होता है? तो वी कैन से व्हाई different reaction have different rate, और we can say speed. कि different reaction की different rate और speed क्यों होती है बेटा? देखो अब आपको पता है जो reactions हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं. जैसे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये 2 एग्जांपल मैंने आपको अभी कराया बेटा. अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखो तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एक क्या है बहुत ही फास्ट है और एक क्या है मॉडरेट है. और क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर आप देखो तो इनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट है मीन्स अगर हम बात करें इंडिविजुअली, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फ्रॉम दैट क्लोरीन, फ्रॉम NaCl. एसिड्स में अगर हम बात करें CH3 की जो प्रॉपर्टीज है वो CO से अलग है, या फिर हम पूरे अगर इथाइल एसीटेट की बात करें वो वाटर से अलग है, इस बेस से अलग है, इस एसिड से अलग है. तो वी कैन से अ डिफरेंट रिएक्टेंट इज यूज्ड इन अ डिफरेंट रिएक्शन. अगर डिफरेंट रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं डिफरेंट रिएक्शन में तो उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होगी. अगर प्रोडक्ट डिफरेंट है तो उनको बनने के लिए भी एनर्जी डिफरेंट होगी. तो वी कैन से a different amount of energy is required to break the reactant and different amount of energy is evolved for the formation of a product. सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट हैं तो उनको तोड़ने और बनने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. और जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उनका जो बेटा रेट है वो भी क्या होगा? डिफरेंट. तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? The different amount of energy is required to break the reactant and different amount of energy is evolved for the formation of a reactant. That's why different reaction having a different rate. अब हम करेंगे बेटा आगे कि जो ये रेट है, हम बार बार रेट स्पीड कह रही है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन. वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है इट इज चेंज. कैसे? देखो बेटा अगर हम स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके किसमें चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में. अब देखो जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में अगर ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में क्या था बेटा? NaOH और HCl था. जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो NaCl और H2O बन गया और उस वक्त NaOH और HCl खत्म हो गया. मीन्स कि वी कैन से इन द स्टार्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 100%. But the end of the reactant, the concentration of the product is 100% and the concentration of the reactant is 0%. So we can say with the passage of time, the reactant is finished, reactant is disappeared, but the formation of product take place. So what happens in the reaction? The concentration of the reactant or the product is changed with the time. The concentration of the reactant or product is changed with time. So we can say what is the rate of reaction? Change in concentration whether of a reactant or
divided by time. If I am saying this is a one reaction, journal, I am taking a journal reaction, reactant is changed into a product. Initially, when the time is T1, the concentration of the reactant is R1 and the concentration of the product is P1. And final, at time T2, when the time T2 is approaches, the concentration of the reactant is decreased. It is changed into a R2 and the concentration of the product is increased, that is a P2. How we can detect, how we can calculate the change in concentration? कैसे calculate कर सकते हैं? Final minus initial. So we can say delta R is the change in concentration. This is equal to R2 minus R1, and delta P is the change in concentration of the product, P2 minus P1, and with change in time, that is a delta T, we can say T2 minus T1. Clear है बेटा? So we can express the rate of reaction in change in concentration of the reactant with time. But how we can write? हम कैसे लिख सकते हैं इसको rate of reaction को? तो we can write the rate of reaction in a two term, whether in the term of reactant or in the term of a product. As you know, in a chemical reaction, the concentration of reactant is decreased, but with the passage of time, the concentration of a product is increased. So how we can write the rate of reaction? If I am writing in term of a reactant, so we can say decrease in concentration of reactant divided by change in time. And same, if I am writing rate of reaction in term of product, so we can say increase in concentration of product divided by change in time. Then how we can represent? कैसे represent कर सकते हैं rate of reaction? We can express the rate of reaction in both the, whether in the term of a reactant or in a product, because in a reaction, reactant is changed into a product, and we have to express the rate of reaction in both terms. How? The rate of reaction is equal to change in concentration of reactant divided by change in concentration of the time, but that concentration of the reactant is decreased. That decrease is shown by putting a negative sign in front of it. And what happens with the product? The concentration of the product is increased, and that increase is shown by putting a positive sign in front of it. I hope you clear it. The negative sign represents the decrease in concentration, and the positive sign shows increase in concentration, but the reaction is goes on. Reaction is going on. Now I am discuss the example of it. If this example is came in the paper, PCl5 is changed into PCl3 plus Cl2. Write the rate of reaction. So how you can write the rate of reaction equal to delta. Delta represent the change in concentration of a PCl5 with change in time, and the reactant is decreased, we put a negative sign, is equal to change in concentration of PCl3 divided by with change in time, positive sign because this is a product, equal to change in concentration of Cl2 divided by delta T, putting a positive sign. This is also a product. So this is the rate of a reaction. So we can express the rate of reaction is any one of a time, whether in the form of a PCl5, whether in the form of a PCl3, whether in the form of a Cl2. If in a numerical they ask the rate of reaction in term of the formation of a PCl3, then what we do? We do rate of reaction is equal to PCl3 delta T, because they asked to express the rate of reaction only in the term of a PCl3 formation. That's why we are writing a rate this. If the value of this is given, we can calculate the concentration. If the time is given, we can calculate the concentration. If the time and rate is given, we can calculate the concentration. By this you can easily solve the numerical. And the next topic is we will discuss in the next video. If you have any doubt, you can ask. Thank you and have a nice day.